अस्सलामुअलैकुम मोजू हेलो। मैं आज आपके साथ डबल चॉकलेट कुकीज़ बनाऊंगी। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1 3/4 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर, आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मक्खन, 1 कप शक्कर, 56 ग्राम सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स, 1 अंडा, हाफ अ टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ अ टीस्पून नमक, थोड़ा सा नींबू का पानी और दूध। सबसे पहले मैं मक्खन क्रीम करना एक हैंड मिक्सर के साथ। अब मैं स्क्रेप कर दूँगी है। क्रीम कर ली। अब मैं शक्कर डालना है अंदर। मैं ये भी स्प्रेड कर रही हूँ। मैं ये क्रीम कर ली। अब मेरे को चॉकलेट पिघलाना है एक सॉस पैन में। मेरे को लो हीट पे पिघलाना है चॉकलेट। ये हो गया। अब मैं तो ये मक्खन स्पैचुला से पूरा निकाल सकते हैं। अब मेरे को ये मिक्स करना है अंदर। अच्छी बुआई। मेरे को अंडा डालना है अंदर। अब अंडा डालना है। आइए मैं हैंड मिक्सर से मिक्स कर सकती हूँ। मैं ये हैंड मिक्सर से मिक्स कर ली। अब मेरे को हाथ से मिक्स करना है।
अब मेरे को सावर मिल्क बनाना है। अच्छा, सावर मिल्क के लिए 1 टीस्पून नींबू का पानी चाहिए होता। वन टीस्पून नींबू का पानी और मेरे को दूध चाहिए होता। ये पूरा फिल करना है जब तक 1 3/4 कप बन गया। ये मिक्स करना है। अब मैं ये सावर मिल्क अंदर डालूंगी। अपनी में तो ये हाथ से मिक्स करना है। अब मेरे को फ्लावर, बेकिंग सोडा और नमक डालना है और ये मिक्स करना है। जब ये मिक्स करिए थोड़ा थोड़ा अंदर डालना है। अब मैं थोड़ा अंदर डाल रही हूँ। मैं ओवन को प्रीहीट कर ली 350 फ़ारेनहाइट। मैं ये मिक्स कर ली और ये टेक्सचर होना चाहिए स्मूथ बट थोड़ा हार्ड। अब मैं ये स्कूपर से स्कूप करने हैं अंदर। हमने टूटी बैटर ये ट्रेज में ट्रांसफ़र कर ली। अब मेरे को ये ओवन में डालना है 10 to 12 मिनट्स के लिए। अब मेरे को अपना आइसिंग बनाना है जो मैं कुकीज़ पे लगाऊंगी। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। 1 1/4 cups पिसी हुई शुगर, 3 tablespoons मक्खन, 1 1/2 tablespoons गरम कॉफ़ी, 1/3 cup कोको पाउडर। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मक्खन लूँगी और क्रीम करूँगी। अब मैं ये क्रीम करूँगी।
बस थोड़ा साइड से स्ट्रेट कर लूँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा पाउडर शुगर डालूंगी अंदर और अब मैं ये बटर के साथ मिक्स करूँगी। मिक्स डाली, अब मैं पूरा पाउडर शुगर डाल सकती हूँ अंदर। मैं थोड़ा मिक्स कर लिया, मैं कोको पाउडर अंदर डालना है। और मैं कॉफ़ी भी डाल सकती हूँ अंदर। मैं ये हाथ से थोड़ा मिक्स कर लूँ। ये बहुत अभी तक बहुत पाउडरी है, तो मैं थोड़ा और कॉफ़ी डालूंगी अंदर। 2 चम्मच। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत पाउडरी है, जब बहुत रनी है, आप पाउडर शुगर डाल सकते हैं या आप कॉफ़ी डाल सकते हैं। थोड़ा और डालूं कॉफ़ी, इसी थोड़ा रनी होना चाहिए। ये पाउडर यहाँ तो बट हाथ मुझसे नहीं चाहिए। अब तो मैं ये वेस्ट निकाल रही हूँ उससे। और मैं ये हाथ से थोड़ा मिला रही हूँ। हमने कुकीज़ ओवन से निकाल दी थी और ये थोड़े कूल हो रहे लाइक 20 मिनट्स के लिए। अब मैं अपना फ्रॉस्टिंग लेऊंगी और एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और ये कुकीज़ पे फ्राई करूंगी। अब मैं अपना पाइपिंग बैग थोड़ा काटूंगी, थोड़ा में डालूंगी टिप। अब मैं ये कुकीज़ पे पाइप करूंगी।
हमने पूरे कुकीज को फ्रॉस्ट कर लिया, अब मैं चखूंगी एक। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी है, अगर मैं बना सकती हूँ आप भी बना सकते हैं।